Hello, welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the classification of directive principle of state policy. The classification of directive principle of state policy is been divided into four different categories. These are the economic and social principle, the Gandhian principle, principle policy relating to international peace and security, and miscellaneous. So, let us begin with the first classification, the economic and social principles. Well, the state shall endeavour to achieve social and economic welfare of the people by providing adequate means of livelihood for both men and women. इसका मतलब सिंपल है that state will try its best under this economic and social principle to provide basic minimum livelihood for a man and woman. When we talk about livelihood, we basically talks about basic necessities such as food, clothing and shelter. और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोथ आदमी और औरत को ये मिनिमम लाइवलीहुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करे. The second point of economic and social principle is reorganizing the economic system in such a way to avoid concentration of wealth in few hands. State have to come up with the economic system in such a way that it avoids the concentration of wealth in a few hands, because what happens if the wealth is concentrated in one hand or a few hand, then we have the great divide between the people who have everything and who have nothing. In India, we have certain people who are super rich and who controls a lot of wealth, and therefore, and wealth is in form of either money or a property, and therefore India has to come up with such economic system that we avoid such concentration of wealth in few hands, and this wealth get redistributed among everybody. In India, हमारे इंडिया में भारत सरकार को एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लाना चाहिए जो ना कि वेल्थ को कुछ इंसानों के हाथ में वेल्थ होता है, जो धन होता है वो कुछ इंसानों के हाथ में ना होते हुए वह सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि जो देश की वेल्थ है वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. और ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई, उसको हम सोशल इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं. और ऐसे करने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कैन बी reduced. Moving on, point number 3, securing equal pay for equal work for both men and women. Yes, Government of India under this policy must try and work out to bring the common understanding when it comes to equal pay for equal work, and there should not be discrimination between men and women. It's very simple. Equal pay मतलब the stress is given more on equal pay for equal work, मतलब same wages have to be paid for a same work. जो इंसान काम करता है, भले वो आदमी हो या औरत हो, दोनों में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और दोनों को समांतर पेमेंट देना चाहिए, बिकॉज बोथ द मैन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, सेम काम कर रही है, इसलिए सेम पेमेंट देना चाहिए, ना कि मैन गेट मोर और समटाइम वुमेन गेट लेस. Next we have a point, securing suitable employment and healthy working condition men and women. Well, the state and the government must try their best to introduce a suitable condition, especially conditions related to employment and healthy working condition for men and women. और भारत सरकार को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि
कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए और जो कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट की, काम करने की, वो हमेशा हेल्दी हो ताकि दैट बेनिफिट्स मैन एज वेल एज वुमेन, और ना कि वो हजार्डस या अनहाइजीनिक हो। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है when it comes to economic and social principle. Next we have guarding the children against exploitation and moral degradation. It is the most important duty of the state that state must protect its children, its citizens especially, against exploitation, because in India we have a lot of different type of exploitation of children's, not only just exploitation but also they should be protected from moral degradation. भारत सरकार की और एक जिम्मेदारी है और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि भारत के बच्चों को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह का शोषण होता है और उससे उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बट ऑल्सो मोरल डिग्रेडेशन, बिकॉज चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. Next we have state must make effective provision for securing the right of work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disabilities. Next very important point is that state must make various provision to secure the work. Example, right to work. Right to work is another very important aspects. Education is one of the most important tool or system through which actually we can bring a change, as well as state must provide assistance in case of unemployment, old age, sickness and disabilities. Now unemployment, old age, sickness and disabilities are these new emerging problems of the state, so therefore state must make effective provisions to bring a change in this aspect. सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि राइट टू वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर एक इंसान को काम करने का अधिकार है और ये अधिकार उनको देना चाहिए बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस. दूसरी बात, शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है. शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जहाँ पर थ्रू शिक्षा हम चेंज ला सकते हैं इस सोसाइटी में, इस देश में. और शिक्षा के अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी. नेक्स्ट वी हैव स्टेट मस्ट मेक प्रोविजंस फॉर securing just and humane condition of work and maternity relief. Again, state must try to introduce a humane condition of a work and maternity relief. Maternity relief is very important for all those women, and especially in India we have a special provision for maternity relief for the women who have just delivered their बेबीज़. नाउ यहाँ पर भारत सरकार को और एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका ड्यूटी है, दैट भारत सरकार मस्ट और स्टेट मस्ट वर्क फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन वेर इन वी हैव अ ह्यूमेन कंडीशन, और जो विमेंस होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उनके लिए स्पेशल मैटरनिटी रिलीफ देना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव टेकिंग स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट हैज़ टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन अ वे टू पार्टिसिपेट वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इन अक्रॉस द sectors, so that it brings some kind of a order or some kind of a balance between the workers and the management, because workers are very important aspects of any economy or any society. यहाँ पर भारत सरकार को ये भी याद रखना चाहिए कि जो वर्क फोर्स है, यूनियंस है, उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हर एक देश की इकोनॉमी, स्पेशली हमारे हमारी इकोनॉमी में उनका बहुत बहुत योगदान है, और इस योगदान को हमेशा याद रखते हुए उनको मैनेजमेंट में उनके विचार, उनके सुझाव लेने चाहिए टू इम्प्रूव द कंडीशन so that it benefits economy by and large. Next, promoting education and economic interest of working section of people, especially of SCs and STs. Yes, this is another very important duty of the state government and the central, that they must promote education and economic interest among the special section of our society, which is scheduled caste and scheduled tribes, because through education and economic interest we can expect that this community can be uplifted. भारत सरकार को ये भी याद रखना चाहिए और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए टूवर्ड्स ST and SCs by promoting education and economic interest. शिक्षा और आर्थिक मदद और आर्थिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हें हम बाय एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अपलिफ्ट कर सकते हैं और उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को जोड़ सकते हैं। ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। नेक्स्ट, सिक्योरिंग फॉर all the workers reasonable wages and cultural opportunity. Very important. All the state and all the central government must try and work to secure the reasonable leisure of free time as well as cultural opportunity for all the workers. भारत सरकार को ये भी दो पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि एक कल्चरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए फॉर वर्कर्स एज वेल एज उनके लिए एक रिजनेबल लीजर टाइम भी होना चाहिए। इसलिए इन इंडिया वी हैव minimum 8 hours of working, as well as we promote lot of cultural opportunities at wherever it is possible. Next, make efforts to raise the standard of living and public health. Next, government has to make various efforts to raise the standard of living and especially the public health of the society. भारत सरकार को ये भी याद रखना चाहिए कि निरंतर कोशिश होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और ऊपर उठाने की, एज वेल एज जो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको भी उसमें भी कुछ सुधारना, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। This is another very important duty under economic and social principle. And the last is that it must provide early education care and education to all the children from the age of 6 to the age of, let's say, 14. Now this is another very important duty of the state and the government, both at central and state, that the government must focus more on early child care and education, because as I said, education is the most important tool. It is the only way to bring the social justice as well as social change for a betterment in India. अंत में ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि वह एजुकेशन प्रोवाइड करे बच्चों को फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम खुशहाली, चेंज या परिवर्तन ला सकते हैं। सो दीज आर दी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच मेक्स the economic and social principle as one of the dynamic factor or a classification of directive principle of state policy. Next we have the Gandhian principle. So next classification of directive principle of state policy is the Gandhian principle. Well, following are the principles which are based on the ideas advocated by Mahatma Gandhi, and these are as follows. First, to organize village panchayat.
Now, Gandhi always believed that the real democracy, the real Indians lives in villages, and he believed that until unless we strengthen the villages and join these villages to the mainstream of politics, we cannot bring the change. And only way of introducing the governance and to join these villages to the mainstream of politics is through panchayat. And therefore he believed that panchayat must be given more power, and panchayat is the only way through which we can connect our villages back to the mainstream of Indian politics. गांधी का हमेशा ये सोचना था कि जो रियल पावर है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, द रियल जो इंडियंस रहते हैं वो गाँव में रहते हैं, और जब तक एक गांव हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ नहीं जाते तब तक कौन सी भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर लो लोगों के लिए वो उन लोगों तक पहुंच नहीं सकती. इसलिए गांधी ऑलवेज बिलीव दैट एवरी विलेज मस्ट हैव अ पंचायत. पंचायत वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट थ्रू पंचायत वी कैन ब्रिंग अ चेंज in our society by empowering all the men and women. Next very important point, to promote cottage industry in rural area. Gandhi always again believed that we must protect and promote cottage industries in the rural area, because these industries eventually will create more opportunities in terms of job, in terms of circulation of economy, as well as this will help to improve the स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. गांधी का ये भी कहना था कि कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम हमारे रूरल एरिया में चेंज ला सकते हैं. वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है, लोगों को काम मिल सकता है, लोगों के हाथ में पैसा आ सकता है, और इससे जो गांव है उसकी उन्नति भी हो सकती है. एंड देयरफॉर ही प्रमोटेड एंड देयरफॉर ही सपोर्टेड द नीड ऑफ अ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल area. Third, he believed that state must prohibit intoxicating drinks and drugs that are injurious to health. Gandhi also believed that a state should ban the intoxicate waste such as drinks and drugs, because this eventually injures the health of the society. गांधी का ये भी कहना था कि जो शराब होती है, जो ड्रग्स होते हैं, या इंटॉक्सिकेट वेस्ट जिसे जैसे कि ड्रिंक्स होते हैं, इन्हें बैन करना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्रोहिबिट करना चाहिए, बिकॉज इनका सेवन करने से हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ कैटल्स and prohibit slaughters of cows. Gandhi also believes that we must protect and improve and preserve the breeds of various cattle which we have in India, and also prohibit slaughtering of the cows. गांधी का यह कहना है कि गांधीयन प्रिंसिपल ये है कि हमें जो हमारे गाय है इंडिया में, भारत में, उनकी जो ब्रीड्स है उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, और जो काउ स्लॉटरिंग हाउसेस है उन्हें बंद करना चाहिए. सो दिस इज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल which again has made a very important part or a classification of directive principle of state policy. Next we have directive principle of state policy relating to international peace and security. Now here are the following very important points which will talk about the directive principle of state policy relating to international peace and security. Now here we need to understand that India should render active cooperation for world peace and security, and for that state shall endeavor to following points. Point number 1, state must promote international peace and security. Well, this is another very important duty of the central government, especially that we must work together with other nations, especially in United Nations, and promote international peace and security. भारत सरकार की और एक जिम्मेदारी है at international level that
हम अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करें, और ये प्रमोशन हम वेरियस फोरम के वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, bilaterally as well as multilaterally. So this is another very important point, beginning with the directive principle of state policy related to international peace and security. Next point is that state must maintain just and honorable relations between the nations. Well, every nation, in fact, from India's perspective, we must try to maintain honorable relations between various nations, especially our neighbors who are all around us. भारत सरकार की और एक जिम्मेदारी है कि हम एक ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करें हमारे नेबर में, स्पेशली जो देश हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, भले वो ईस्ट में हो या वेस्ट में है, उनसे सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने बहुत बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट, वी मस्ट फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ and treaty obligations. Yes, India must try hard to maintain the respect for all the international laws which we are signatory to, as well as follow those treaties which we have signed with other states as well as other neighbor to maintain again international peace and security. हमें हमेशा ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करें, उनका मान रखें, उनका रिस्पेक्ट रखें, और जो भी ट्रीटी हमने साइन की है, भले वो किसी भी देश से हो, वो ट्रीटी को फॉलो करें, और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंडिया मस्ट एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. यस, wherever we have any dispute, international dispute with any nation, we have to try and talk about it. We have to bring the party onto the table and try and solve all the issues with mutual agreement. हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि भारत सरकार की और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ पर हमारा कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा, तो उस डिस्प्यूट को टॉक के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू, बात करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि दूसरी पार्टी को भी बेनिफिट मिले और हमें भी बेनिफिट मिले. सो दिस आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और अंत में, एंड द लास्ट वी हैव इज miscellaneous. So under miscellaneous, this category, directive principle of state policy, call upon the state to these following points: to secure for all Indians a uniform civil code. Well, under miscellaneous, it talks about that state must call upon to introduce a uniform civil code for all the Indians across India, north, south, east, west, including the 2 island chains of Andaman, Nicobar Island and Lakshadweep Island. मिसलेनियस जो पॉइंट है यहाँ पर, ये फोकस करती है दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लागू किया जाए भारत में. वेल, एज एवरीवन नोज दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट बीन implemented across India because every state, every community has certain reservation. Exception is Goa. In Goa, we have uniform civil code across all the religious communities or ethnic groups. Therefore, it is difficult in various other states. भारत सरकार का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लागू किया जाए, लेकिन बहुत से स्टेट में ये फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम. एक्सेप्शन सिर्फ गोवा में है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन है सिंस 1961 and much before when Portuguese were ruling. Next,
point is to protect historical monument. Yes, this is another very important duty of the central as well as state government, that wherever there are historical monument they need to protect. It's very simple point to understand that जहाँ पर भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मोनूमेंट्स है, भले वो टेम्पल हो, चर्चिस हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारास हो, फोर्ट हो या हाउसेस हो या पैलेसेस हो, ये सब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को प्रोटेक्शन देना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उन्हें पता हो सके कि हमारी हिस्ट्री क्या है एंड द रिच हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री. Next, state must try to save environment from pollution and protect wildlife. This is another very important demanding issues in contemporary era, that state must take various provisions and steps and measures to save our environment from pollution as well as to protect the wildlife. Environment एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत बहुत ख़तरा है, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट से बहुत दूर जा रहे हैं. इसीलिए सरकार को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट उसे प्रोटेक्ट की जाए, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज जो पशु पक्षी जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें भी जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, बिकॉज वेदर इट्स अ वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बीइंग, वी आर द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट को हम निगलेक्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंसान को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, स्पेशली इन द ईरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट is to make necessary arrangement for disbursement of free legal justice through suitable legislation. Last is very important point, which talks about free legal justice, especially to all the people who cannot afford to hire an advocate or a lawyer, and this has to be carried out through suitable legislation. एक कानून के तहत भारत सरकार को सभी लोगों को फ्री लीगल जस्टिस देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. बहुत से लोग गरीब हैं, वो एडवोकेट या लॉयर को हायर नहीं कर सकते, इसलिए भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर एक इंसान को जस्टिस मिले, और इसीलिए निरंतर भारत सरकार को कानून लाना चाहिए ताकि लोगों को फ्री जस्टिस मिल सके. सो these are the 4 very important classification of directive principle of state policy, and I hope you have understood the meaning and classification of directive principle of state policy. In next tutorial we shall talk about the last part of directive principle of state policy, that is achievements of directive principles of state policy. So till then, take care and see you soon in next tutorial.